Everyone, welcome to my YouTube channel नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। Today in this video, we will learn the second part of the lesson, the interview by Christopher Sylvester. In its first part, we learned that what are some of the positive and negative views on interview? Now, in this part, we have a piece of an interview between Umberto Eco and Mukund Padmanabhan. So, I am a professor who writes novels on Sunday. This statement is given by Umberto Eco. Umberto Eco कहता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और संडे को नॉवेल्स लिखता हूँ. So this is the heading of the second part of the lesson. So following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. So here the person who is taking interview of Umberto Eco, he is Mukund Padmanabhan. So Umberto Eco was a professor at university in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. So semiotics mean the study of science. So formidable reputation means first class recognition, first class reputation. तो इसने बहुत ही बढ़िया रेपुटेशन हासिल किया है, acquired mean to achieve. So he was a professor at the university. This question will appear in the exam. Who was Umberto Eco? Then the student will write that he was a university professor. So literary interpretation and medieval aesthetic before he turned to writing fiction. So literary fiction, academic text, essays and children books, newspaper articles, his written output is staggeringly large and wide-ranging. So here, Eco says that he acquired the intellectual superstardom in 1980 when his novel, The Name of the Rose, was published, and more than 10 million copies of this book were sold. So यहाँ पर इको कहता है कि जो नेम ऑफ द रोज उसकी जो नॉवेल थी उससे उसको बहुत ही बड़ी सफलता मिली थी. He attained stardom, super stardom, by that work. So here is the piece of an interview. The question asked by the Mukund in the beginning of an interview, that is, the English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand one man can do is very work. यहाँ पर मुकंद उससे पूछता है कि हाउ ही गेट्स टाइम फॉर हिज डिफरेंट वर्क्स, कि वो अपने जो अलग अलग तरह के काम हैं उनके लिए समय कैसे निकाल लेता है. सो द अम्बर्टो इको सेज, maybe I give the impression of doing many things, what in the end I am convinced I am always doing the same thing. So this was the reply made by Umberto Eco to Mukund. Then Mukund, which is Umberto Eco? Now that is more difficult to explain. It is not easy to explain this. I have some philosophical interests. ये मेरे कुछ एक जो हैं वो दार्शनिक रुचियां हैं. philosophical होता है दार्शनिक. It means devoted to the study of fundamental nature of knowledge, reality and existence. That is philosophical. And he want to achieve those interests by his academic work and novels. So even my books for children are about non-violence and peace. You see the same ethical means moral, that is connected with what is right and what is wrong. So uh, he achieved these philosophical interest by his work of novel and academic writing. So he says that his books written for children that are always about non-violence and peace. So, and then I have a secret.
Did you know what will happen if you eliminate the empty space from the universe? Eliminate the empty space in all the atoms, the universe will become as big as my fist. So similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I can call them interstices. So say you are coming over to my place, you are in an elevator, and while you are coming up, I am waiting for you. So here Umberto Eco talks importance of empty spaces in human life. He says that empty spaces are very valuable and one can make use of them for writing, for writing anything. So he explains the meaning of empty spaces with the help of an example, that is an elevator. Suppose if you are coming to me and I am waiting for you. So this is an interstice, an empty space. I work in empty spaces और मैं उसी खाली समय में काम करता हूँ while waiting for you, while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article. I have already written an article mean I do use of empty space. इट मीन कि जो आपको मेरे पास पहुंचने के लिए टाइम लगा, द टाइम यू टुक टू रीच मी, आई यूज्ड दैट फॉर राइटिंग माय आर्टिकल. सो ही सेज सो टू द Mukund Padmanabhan. Then Mukund, not everyone can do that. Of course, your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. So it is marked departure from a regular academic style. So here Mukund says that Mr. Eco, you have some special qualities that you add to your writing. For example, you have a certain playful and personal quality. So playful mean you have fun loving articles, you have you have personal quality about it. So it is a marked departure from a regular academic style. So what is regular academic style? It is often dry and boring. It is depersonalized. Depersonalized mean इट इज इम्पर्सनलाइज्ड, मतलब उसमें कोई पर्सनल करेक्टर नहीं होता है. इट इज डीपर्सनलाइज्ड, इट इज विदाउट अ पर्सन. सो इट इज ऑफन डल एंड बोरिंग. तो ये जो एकेडमिक स्टाइल होता है ये दिस इज यूजली डल एंड बोरिंग, बट योर स्टाइल इज प्लेफुल एंड जॉली. So have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? तो क्या आपने इसको जानबूझकर अपनाया है? कॉन्शियसली क्या मतलब होता है डेलिबरेटली, यहाँ पर आए इसका मीनिंग आएगा कि हैव यू डेलिबरेटली अडॉप्टेड दिस टेक्निक, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, और इट मीन्स, or is it inborn quality? Is it your inborn quality? Umberto Eco, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholar learns a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses. तो वहां पर उसको प्रोफेसर ने एक रिमार्क दिया था जब उसने पहला अपना जो फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, डिसर्टेशन का मतलब होगा जो उसका जो भी कोई लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है या ऐसे है उसको कहेंगे. सो डॉक्टरल डिसर्टेशन मतलब शोध पत्र जो हो गया उसका. तो प्रोफेसर ने उसको क्या रिमार्क दिया था, स्कॉलर लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस. कि जो स्कॉलर होते हैं वो झूठी कल्पनाएं अपने सब्जेक्ट में डाल डाल एंटर करते हैं, देन दे करेक्ट देम एट द एंड, और जब अंत में वो उनको दे करेक्ट देम, उनको सही करते हैं, दे पुट द कंक्लूजन, और बाद में दे अराइव टू देयर रिजल्ट. सो यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च. और जब इसके विपरीत तुम काम करते हो, कॉन्ट्रेरी मीन ऑपोजिट. Even including your trails and errors, at the same time he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book. So it means
He agreed with me. With me means with the Umberto Eco, and he published his piece of writing, that is dissertation, as a book. So which meant he appreciated it. It means he liked my writing, he liked my dissertation. So at that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. तो उस वक्त फिर जब at the age of 22 I realized the importance of my writing, the importance of my style. So while telling the story of the research, so this is my essays always have a narrative aspect. So here he tells that why his writing style has always a narrative aspect, क्यों उसमें जो वर्णन करने वाला जो एस्पेक्ट होता था वो उसकी राइटिंग स्टाइल में होता था. एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव नॉवेल्स. So here he gives the reason of his writing novels at the age of 50, more or less. It, it means he started writing novels at the age of 50. So I remember that my dear friend Ronald Varthi was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. So he also quotes an incident of his friend, that his friend Ronald Varthi, he was frustrated because he wanted to be a novelist, but he was actually an essayist. ही वांटेड टू ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग. उसका फ्रेंड जो था वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था. इट मीन्स ही वांटेड टू राइट अ नोवेल. So one day or another, what he died before he could do so. So he couldn't achieve that because he died. मर गया वो उसको हासिल नहीं कर पाया उस गोल को, मतलब वो नॉवल लिख ही नहीं पाया उसका फ्रेंड. आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. यहाँ पर इको कहता है कि इट डिडंट हैपन विद मी, ये उसके साथ नहीं हुई ये बात. आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट. अब यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि उसने जो नॉवल लिखना जो था वो बाय चांस, ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवल बाय चांस. सो आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड. एक दिन उसके पास करने को कुछ नहीं था, ही वॉज फ्री, तो ही स्टार्टेड इट. नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नरेशन. और उसके बाद वो ही वॉज सेटिस्फाइड विद दैट, उससे वो संतुष्ट भी हुआ. मुकंद, अब मुकंद क्या पूछता है, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. So this was his huge publication. This was a very famous piece of writing by Umberto Eco, The Name of the Rose. Question भी बनेगा ये, what was the reason for huge success of the novel The Name of the Rose? So you have written 5 novels against many more scholarly work of fiction, at least more than 20. So he says that this much of novels you have written, Umberto Eco, over 40. So here Eco contradict. He says that not this much but over 40. 40 से ज़्यादा मैंने लिखी कि I have written over 40. So Mukund over 40, he surprised. Among them a seminal piece of work on semiotics. So seminal piece of work mean important piece of work, that is on semiotics. Semiotic पहले भी आया word, that is the study of science. So what ask most people about Umberto Eco and they will say ही इज द नॉवलिस्ट, डज दैट बॉदर यू. तो यहाँ पर मुकंद उससे कहता है कि लोग, पीपल कॉल यू अ नॉवलिस्ट, सो इज इट बॉदर यू. लोग आपको नॉवलिस्ट कहते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती है. उम्बर्टो इको, यस, बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल ऑन संडे. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका. सो उम्बर्टो इको सेज दैट आई लाइक to be a university professor. He doesn't like to be a novelist. His first priority is university professor. So who writes novels on Sunday? Who writes novels on Sunday? It means in the empty spaces. So it's not a joke. I participate in academic conferences and not meeting of pen clubs and writers. So in this piece of writing, Umberto Eco Umberto Eco wants to say that his first priority is academic, that is his teaching profession as a professor. So his novel writing is his secondary job.
and not meeting of pen clubs and not meeting of pen clubs and writer, I identify myself with the academic community. It means he considers himself as a academic person, not a novelist. But okay, if they they mean most people only have read only the novels, laugh and shrugs. लाफ एंड श्रग्स का मतलब यहाँ पर वो हंसता है, और श्रग का मतलब होता है अपने शोल्डर को मतलब कंधे उचकाना। तो इस तरह से वो हंसता है। आई नो दैट माई राइट बाई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्ज ऑडियंस। मैं जानता हूँ कि नॉवल लिखने के बाद मुझे ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाया हूँ। नॉवल लिखने के बाद मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया हूँ। आई कांट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स। सो मुकंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल। जो नेम ऑफ द रोज जो थी आपकी नॉवल, वो बहुत ही सीरियस पीस ऑफ नॉवल था। सो इट्स अ डिटेक्टिव यार्न at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history. तो ये जो आपका नॉवल थी, वो एक जासूसी डिटेक्टिव होता है, जासूसी। सो जासूसी कहानी थी, यार्न मीन किस्सा। सो इट वाज ए डिटेक्टिव स्टोरी at one level, but also it delves into metaphysics. तो delves mean dig into, मतलब to search deeply. delves into mean to search deeply, यानी कि delves into means टू सर्च डीपली। इट मीन्स बहुत गहराई से खोज करना। सो एक और तो आप कह रहे हैं कि इट वाज ए डिटेक्टिव स्टोरी, और दूसरी तरफ इट वाज अ मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिएवल हिस्ट्री। तो मेटाफिजिक्स किसको कहेंगे? द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डीलिंग विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रुथ एंड नॉलेज, दैट इज मेटाफिजिक्स। एंड थियोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ्स। तो ये इससे कनेक्टेड थी आपकी जो द नेम ऑफ द रोज थी। इट वाज कनेक्टेड टू द मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मीडिएवली medieval history. And on the other hand, it was a detective story, so yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो इसको बहुत सपोर्ट मिला, it got a huge support of the audience. So is it puzzle you? इको, नो जर्नलिस्ट आर पजल्स। इको कहता है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो जर्नलिस्ट थे वो कंफ्यूज हुए थे, दे आर कंफ्यूज्ड। एंड समटाइम पब्लिशर्स, और पब्लिशर्स भी। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश। मतलब वो मानते थे कि लोग जो हैं, द पीपल लाइक ट्रैश। ट्रैश मीन पीपल लाइक easy things, easy and cheap, that is trash, and don't like difficult reading experience. तो उनको डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस पसंद नहीं करते हैं, ऐसा पब्लिशर सोचते थे। सो ये जो आपका द नेम ऑफ द रोज थी, इट वाज अ डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। सो कंसीडर देयर आर 6 billion पीपल ऑन दिस planet। मान लो कि द टोटल पॉपुलेशन ऑन दिस planet is 6 billion. So the name of the rose sold between 10 and 15 million copies. So in a way I reached only a small percentage of readers. तो इसकी जो 10 to 15 copies were sold, so it was a small percentage of the readers, but it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences. लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, 10 to 15 million जो people हैं, वो उनका टेस्ट जो है वो इस तरह का ही है, जो जैसा मैंने लिखा, विच आई रोट। सो or at last don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television. So here he shares, Umberto Eco shares his experience that that he watches television and want to see either Miami Vice. These are the program on the television emergency room. I enjoy it and I need it, but not all day. मुकंद, अब मुकंद क्या पूछता है?
Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? तो ये जो बहुत बड़ी सफलता थी, the selling of that much of quality, that much of quantity of books to the audiences, it was a huge success. So is it connected with the period of medieval history? क्या ये मध्यकालीन इतिहास के साथ संबंधित थी? अम्बर्टो इको, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, इज इट, हो सकता है, that may be, but let me tell you another story because I often tell stories like a Chinese wise man. So here Umberto Eco says that he narrates stories like a Chinese wise man. So my American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. तो जो मेरा पब्लिशर थी अमेरिकन, वो मुझे कहती थी कि आपकी जो 3000, ओनली 3000 कॉपीज कैन बी सोल्ड इन दिस कंट्री बिकॉज देर इज नो कैथेड्रल और पीपल आर नॉट स्टडिंग लेटिन. तो यहाँ पर जो यहाँ यहाँ पर कैथेड्रल नहीं है और nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given advance for 3,000 copies. So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. तो मुझे तो एडवांस जो था वो केवल 3,000 कॉपीज के लिए ही दिया गया, लेकिन बाद में ये मिलियन ऑफ कॉपीज वर सोल्ड इन द यूएस. A lot of books have been written about the medieval past for before mine. I think the success of the book is a mystery. तो ये जो द नेम ऑफ द रोज जो नॉवेल है उसकी जो सक्सेस है उसको ही कॉल्ड इट एज अ मिस्ट्री. इसको एक ये रहस्य बताता है. नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time, it is a mystery. So जो सक्सेस है नॉवल की उसको उम्बर्टो इको जो है वो एक जो मिस्ट्री बताता है उसको कि इट वाज अ. So this finishes your second part of the lesson. I hope you will like it. Thanks for watching.